children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, nutrition in plants. Learning objectives, nutrition, autotrophic nutrition in plants, synthesis of plant food other than carbohydrates, heterotrophic nutrition in plants, and replenishment of nutrients in the soil. Food contains various components such as carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins that are essential for our body. These components of food are called nutrients. These nutrients are used by our body for energy, growth, repair, and to carry out various life processes. देखिए हमारे फूड में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं लाइक फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज करती है. Nutrition. The process of taking in food and its utilization by the organism is called nutrition. Nutrition is of two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organisms make their own food is called autotrophic nutrition. Most plants, algae, and some bacteria produce their own food. They are called autotrophs. Auto means self and tropos means nourishment. The type of nutrition in which a living organism doesn't prepare its own food but is dependent on other living organisms or like plants and animals is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means feeding by others. All animals and some plants directly or indirectly depend on plants for food. They are called heterotrophs. Hetero means other and tropos means nourishment. देखिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को टेक इन करते हैं, देन उसका यूटिलाइजेशन होता है बाय द ऑर्गेनिज्म. अब आपके न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं. ऑटोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया और एल्गी. ओके, तो इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है क्योंकि खुद का खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, राइट. और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं, रादर वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए. और ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स. आपके इस कैटेगरी में आपके जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं. Autotrophic nutrition in plants. Green plants make their own food using simple substances such as water and minerals from the soil and carbon dioxide from the air. They get energy for preparing food from sunlight. They show autotrophic nutrition. Hence, they are called autotrophs or producers. Green plants prepare food by a process called photosynthesis. देखिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं आपको पता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. Photosynthesis. The process through which plants make their own food is called photosynthesis. Photo means light and synthesis mean to make something. This process occurs in the leaves of a plant. For plants to make their own food, they need three simple ingredients from their surroundings: sunlight, water, and carbon dioxide. So how do these ingredients reach the leaves? The food is prepared in the leaves of the plants. The leaves are called kitchen of the plant. The cells of green leaves have several small elongated structures just above the stomata. They are called chloroplast. Chloroplasts contain green pigments called chlorophyll. Food in the leaves is actually prepared by chlorophyll. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है, अर्लियर क्लासेस में भी आप इसके बारे में पढ़ के आए हैं. तो देखिए जो फूड होता है वो प्रिपेयर होता है प्लांट्स की लीव्स में, और इसीलिए लीव्स को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट. ओके, अब ग्रीन लीव्स में आपके कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोमेटा के जस्ट ऊपर, जिन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है. एंड आपको पता होगा कि जो लीव्स है एक्चुअल में वो खाना प्रिपेयर करती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. Plants absorb water and minerals from the soil through their roots, and they are transported to the leaves through pipe-like vessels present inside the roots, stem, branches, and leaves. Actually, these pipe-like structures are present inside the entire plant. These pipes transfer water and nutrients from the roots to the leaves. Plants also release water through stomata on the leaves by the process of transpiration. It creates an upward pull that helps in the transportation of water and minerals from the roots to the leaves. अच्छा, अब देखिए प्लांट जो है वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से अपने रूट्स के थ्रू. अब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पाइप लाइक वेसल्स के थ्रू, जो कि आपके प्लांट के इंटायर प्लांट में ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. चाहे हम स्टेम की बात करें, ब्रांचेस या रूट्स की बात करें, फिर ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो पाइप से ये ट्रांसफर करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को.
ओके, लीव्स तक। इसके अलावा प्लांट जो है आपके वो वाटर रिलीज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. Leaves take in carbon dioxide and release oxygen through the tiny pores called stomata. The stomata are present on the underside of most leaves. The stomata is surrounded by guard cells. The guard cells control the opening and closing of a stomata. The carbon dioxide is taken from the air through these stomata. Stomata जो आपके leaves के underside होते हैं, छोटे छोटे pores होते हैं जिसके through gases का exchange होता है. The light energy is required by plants to synthesize food materials such as carbon dioxide and water. Sunlight is trapped by chlorophyll present in green leaves. Chlorophyll gives leaves the characteristic green color. This process of photosynthesis can be represented through the following equation. Water plus carbon dioxide in the presence of sunlight, chlorophyll, it gives glucose plus oxygen. देखिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए लाइट की भी जरूरत है, यानी कि सनलाइट. और सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? सनलाइट इज एक्चुअली ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल. रिमेंबर दैट, ये क्लोरोफिल का आपका फंक्शन होता है. सो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. Glucose, also called sugar, is a very simple form of food. It is a type of carbohydrate. Oxygen is released during this process. Sugar or glucose generated in the leaves is transported to other parts of the plant through stems. Some sugar is used to release energy and the rest is stored as a starch in leaves, stems or roots. The solar energy trapped by chlorophyll is stored in the glucose molecule. When an organism requires energy, this glucose molecule is broken up and energy is released. देखिए, जब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका वाटर के साथ कंबाइन होता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, एंड देन ये प्रोडक्ट आपके क्या बनते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ओके, इस प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होती है, एंड शुगर और ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअल में फूड जो प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स उसे कहते हैं. अब शुगर जो है या ग्लूकोज है उसको यूज कर लिया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, बाकी एज अ स्टार्च वो आपका स्टोर हो जाता है लीव्स में, स्टेम्स में या रूट्स पे. Do you know certain factors are known to change the rate of photosynthesis? These include the strength of sunlight, the amount of water and the amount of carbon dioxide present in the air. देखिए, ये फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं. Activity 1, to show that water is needed for photosynthesis. Keep a potted green plant in sunlight. Do not water it for 4 to 5 days. You will notice that the leaves of the plant have started drying up and turning yellow-brown. Immediately water the plant. In a day's time, you will notice that the leaves have started looking fresh again. In absence of water, the plants were not able to make food. In absence of food, the parts of plants had started dying. When water was added, photosynthesis occurred and the plant again came back to life. अब हमें ये शो करना है कि वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. आप एक हेल्दी पॉटेड प्लांट, ग्रीन प्लांट है, उसको 4 से 5 दिन के लिए आप उसे वाटर नहीं करेंगे. आप देखेंगे कि वो जो प्लांट है वो ड्रूप होना स्टार्ट हो जाएगा, वो येलो या फिर ब्राउन में हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा. इसके बाद आप इमीडिएटली उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि 1 दिन के अंदर ही लीव्स जो है फिर से फ्रेश दिखना स्टार्ट हो गई हैं. राइट, तो ये क्या शो करता है? दैट वाटर इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. Activity 2, to show that sunlight is essential for photosynthesis. Take a healthy potted plant and place it in a dark room for 2 to 3 days to de-starch it. In these 2 to 3 days, the plant would have used all starch that was stored in it. Now, with the help of paper clips, cover a part of a leaf with a black paper strip and keep it back in the sun for 5 to 6 hours. Plug the leaf, remove the black strip and test for the presence of starch on it. You will see that the exposed part of the leaf turns blue-black when dipped in dilute iodine solution due to the presence of starch. However, the covered part of the leaf does not turn blue-black, showing the absence of starch. This shows that the part of the leaf exposed to sunlight undergoes photosynthesis and shows presence of starch. आपको एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है और उसको डार्क रूम में रख देना 2 से 3 दिन के लिए ताकि वो डी स्टार्च हो जाए. डी स्टार्च देखिए, क्योंकि वो सनलाइट में नहीं है तो खाना नहीं प्रिपेयर करेगा, जो भी उसने स्टोर किया होगा उसे यूज अप कर लेगा. तो दिस इज कॉल्ड डी स्टार्च. अब आपने क्या करना है, एक आपने लीफ लेनी है और इस तरह से उसको कवर कर देना है. सिर्फ स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट आपने ब्लैक पेपर से उसको पेपर क्लिप के थ्रू कवर कर देना है. अब इसको वापस आपने रखना है 5 से 6 घंटे के लिए, आप सन में रखेंगे.
ओके अब आप इस लीफ को प्लग करेंगे, ओके पेपर को रिमूव करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, यानी स्टार्च के लिए आप टेस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स। आप देखेंगे कि जो पार्ट कवर्ड था, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया और बाकी जो ग्रीन पार्ट था, जो अनकवर्ड था, वो आपका ब्लू ब्लैक हो गया। तो व्हाट डज दैट शो? इट शोज दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इस पार्ट को सनलाइट नहीं मिली, इसीलिए इसने खाना प्रिपेयर नहीं किया। Activity 3. To show that carbon dioxide is needed for photosynthesis, take 2 healthy potted plants. Keep them in separate rooms with no light for at least 3 days in order to de-starch them. Place both the plants separately in 2 bell jars. Place a watch glass containing potassium hydroxide in one of the bell jars. After 3 hours, pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch using iodine solution. You will observe that the leaf from the bell jar with potassium hydroxide doesn't turn blue-black. It indicates that there is no starch in the leaf and hence photosynthesis has not taken place as potassium hydroxide has absorbed all the carbon dioxide from the air in bell jar. On the other hand, the leaf from the bell jar that did not have potassium hydroxide turns blue-black because of the presence of the starch in it. It shows that importance of carbon dioxide for green leaves to synthesize food. अच्छा, आपको 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, उनको सेपरेट रूम में रखना है जिसमें लाइट नहीं हो फॉर एटलीस्ट 3 डेज, ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। अब आपने दोनों को बेल जार्स में रखना है इसमें से, और इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, राइट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक 3 आवर्स के बाद आपने एक लीफ प्लग करनी है हर प्लांट में से, और फिर आपने क्या करना है, उसको स्टार्च चेक करना है। तो आप देखेंगे कि जिस प्लांट को आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला था, उसमें जब आप आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट करेंगे, स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे, तो उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, जो प्लांट आपका ये बेल जार के अंदर है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। तो यहाँ से क्या शो होता है कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स टू सिंथेसाइज फूड। Nutrition in other plants. In plants such as the coleus, the leaves are red or purple. You may have also seen plants with orange or yellow leaves. Does photosynthesis take place in such plants? Leaves of such plants appear not to have chlorophyll, but it is present in the leaves. Pigments of other colors are in more amount in such leaves, therefore masking the green color of the chlorophyll. अच्छा देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं आपके, जैसे कि कॉलियस प्लांट है, इसकी जो लीव्स होती है ना, रेड या पर्पल होती है, और कुछ आपके ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनका कलर ऑरेंज या येलो होता है। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं? अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रीन कलर तो है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे क्यों करेंगे? तो ऐसे एक्चुअल में ऐसी जो प्लांट्स, इनकी जो लीव्स है ऐसे अपीयर इसलिए होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, उनमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि इनका बाकी जो दूसरा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनको कुछ और कलर मिलता है, जैसे कि रेड एंड पर्पल, वो उससे ढक जाता है, राइट। Some plants such as cactus grow in a hot and dry desert environment where there is a scarcity of water. Their leaves are reduced to spines to prevent loss of water through transpiration. However, photosynthesis in such plants take place in their green stem that contains chlorophyll. अच्छा, कैक्टस आपका जो डेजर्ट पे होता है, उसकी लीव्स जो है स्पाइंस पे रिड्यूस हो जाती हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है वो ना हो। तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? ऑफ कोर्स होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता है कि ग्रीन स्टेम में, जिनमें आपका क्लोरोफिल होता है। Algae are very small organisms. They are green in color due to presence of chlorophyll. They can also make their own food in presence of carbon dioxide, water and sunlight. And algae जो आपके बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, they are green in color और ये photosynthesis करते हैं। Synthesis of plant food other than carbohydrates. Plants synthesize only carbohydrates through photosynthesis. But how do they obtain other essential nutrients such as fats, proteins and vitamins? Some plants can break down carbohydrates into fats and store them. In addition to the carbon, hydrogen and oxygen present in carbohydrates, plants also need nitrogen, which is present in proteins and vitamins. So, how do plants get this nitrogen? Plants देखिए जो है कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फिर इनको
बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन ये कहाँ से मिलते हैं? तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं फैट में एंड देन इसको स्टोर करते हैं। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो आपका कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है, राइट, एंड प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो कि आपके प्रोटीन्स और आपके विटामिन में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? The nitrogen present in the air and the soil is not directly usable by plants. Plants get usable nitrogen in the following ways. Bacteria in the soil convert the organic nitrogen in soil into usable form. In leguminous plants such as pulses, a special bacteria called rhizobium, which is found on the roots, directly converts nitrogen from the air into usable form. Nowadays, farmers add fertilizers to replenish usable nitrogen in the soil. From the soil, usable nitrogen travels with water to the leaves where it mixes with carbohydrates to produce proteins and vitamins. अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो प्लांट्स उसको यूजेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे होता है? बैक्टीरिया जो सॉइल में आपके प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म। लेग्यूमिनियस प्लांट में एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है कि ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। और आज के टाइम पे तो देखिए फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स में आपके ऑलरेडी नाइट्रोजन होते हैं। फिर सॉइल से जो यूजेबल नाइट्रोजन है ये ट्रैवल करती है पानी के साथ लीव्स तक, जहाँ पे ये किसके साथ मिक्स होती है? कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स होती है टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड vitamins. Importance of photosynthesis. It is a primary source of energy for all living organisms living on Earth. It helps in purifying air and maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in nature. It helps in the synthesis of important nutrients present in food like carbohydrates, fats, and proteins. Fossil fuels found in nature have chemical energy stored in them, which is the solar energy that was trapped and stored during photosynthesis millions of years ago. Photosynthesis का importance क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है। फॉसिल फ्यूल जो आपके नेचुरली पाए जाते हैं उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि आपकी सोलर एनर्जी होती है जो ट्रैप रहती है एंड आपकी स्टोर्ड हो जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। Heterotropic nutrition in plants. Most plants are autotrophs. However, some plants are heterotrophs. Heterotropic plants depend completely or partially on other organisms for nutrition. These plants can be classified into 4 types. Number 1, parasitic plants. Parasitic plants derive some or all of their nutrition from another host plant. They develop roots which penetrate into the stem or the root of the host plant and absorb the nutrients. They deprive the host plant of valuable nutrients, slowing down its growth. Parasitic nutrition exists in plants like mistletoe that grows on mango and mahua trees, cascata or amarbel or daughter plant, Rafflesia, plant with the largest flower around 12 inches in diameter and 11 kg in weight, and sandalwood trees. Cascata has no chlorophyll, so it completely depends on the host plant. Mistletoe can carry out photosynthesis but depends on the host plants for water and minerals. देखिए ज़्यादातर आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पार्शली या कम्प्लीटली होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट? जैसे कि पैरासिटिक प्लांट की आप बात करें तो ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं होस्ट प्लांट से। इनमें ये रूट्स डेवलप करते हैं जो कि आपके पेनेट्रेट हो जाते हैं स्टेम या रूट में होस्ट प्लांट के और फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो आपका होस्ट प्लांट है उसके क्योंकि ये उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनकी कमी हो जाएगी और होस्ट प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपका जैसे कि मिसलटो में है जो आपका मैंगो एंड महुआ ट्री में होता है, कस्कटा या मार्बेल या डॉडर प्लांट है, रफलीसिया आपका जो लार्जेस्ट फ्लावर है, और सैंडलवुड ट्रीज। कस्कटा में देखिए कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसका मतलब कंप्लीटली होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। मिसलटो फोटोसिंथेसिस तो करता है बट वो होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होता है फॉर वाटर एंड मिनरल्स। Insectivorous plants. Insectivorous plants partially derive their nutrition from organisms such as insect. They can carry out photosynthesis but grow in areas where the soil is poor in nutrients. So they require additional nutrients which they get from insects. The picture or the jug-like thing on the plant is actually its modified leaf. The upper part of the leaf acts as a lid.
The inside portion of the lid has hair on it. When an insect enters a picture, the lid closes and the insect gets trapped in the hair of the lid. The leaf then produces juices which help in digesting nutrients from the insect. Since pitcher plant is green in color, it can prepare its own food. It derives nutrients like nitrogen from the insect. Venus flytraps can snap their leaves shut in less than a second to trap insects. अब देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, क्या वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट वो ऐसी जगह पे होते हैं जो कि सॉइल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होती है, तो उनको अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं. तो जैसे कि आपका पिक्चर प्लांट है, राइट, आपका पिक्चर की शेप में होता है, इसमें आपकी एक लीफ होती है जो लिड का काम करती है. तो जब कभी उस पिक्चर पे कोई इंसेक्ट बैठता है तो लिड एकदम से क्लोज हो जाती है, फिर वो जो इंसेक्ट है उसमें ट्रैप हो जाता है प्लांट के हेयर में. फिर उसके बाद जो लीफ है वो जूसेस आपकी प्रोड्यूस करती है, जो इंसेक्ट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प. वीनस फ्लाई ट्रैप अपनी लीव्स को शट कर लेता है जैसे ही कोई उस पर इंसेक्ट बैठता है, और इस तरह से वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. Saprotrophs. A saprotroph is an organism that gets its nutrition from dead or decaying matter. The roots of saprophytic plants contain fungi which convert decaying matter into nutrients that can be used by the plants. The saprotrophs produce juices that convert the decaying matter into a liquid solution. They derive nutrients for their growth from this solution. This type of nutrition, in which nutrients are derived by an organism from dead and decaying matter, is called saprophytic nutrition. Mushrooms are a type of fungi that obtain nutrition from decaying matter. Fungal spores are present in air and can obtain nutrition from decaying matter such as bread. सेप्रोट्रॉप आपका वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से. ओके, तो जैसे कि आपका मशरूम की बात करें हम, मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगस जो कि अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है किसी डिकेइंग मैटर से. फंगल स्पोर्स जो होते हैं आपके जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं किसी डिकेइंग मैटर से, जैसे कि ब्रेड. Symbiotic plants. Symbiotic plants are a pair of host and a parasite, in which the parasite gets its nutrition from the host but provides it some benefit in return. In symbiotic nutrition, two organisms depend on each other for their needs without causing damage to each other. In this type of relationship, both the organisms benefit from each other. The plants that have symbiotic relationship are found in lichens. Lichen is an association between algae and fungi. The fungi get nutrients from the algae and in return provide shelter, water and minerals to the algae. Symbiotic relationship क्या होता है कि जिसमें दो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें लाइकेन की, इसमें ये एसोसिएशन है एल्गी एंड फंगी का. तो फंगी क्या करता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एल्गी से, बिकॉज एल्गी हैज़ क्लोरोफिल, इट इज़ ग्रीन इन कलर. एंड बदले में क्या होता है कि उस आपका जो फंगी है वो क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल एल्गी को. The algae are green in color and prepare their own food. This food is shared with the fungi. In return, the fungi provide shelter, nutrients and water to the algae to make food. Similarly, rhizobium and leguminous plants have a symbiotic relationship. The rhizobium depends on the roots of the plant for nutrition. In return, it absorbs nitrogen present in the air and converts it into a usable form for the plant. Rhizobium bacteria are present in the root nodules of some leguminous plants such as gram, moong, peas, beans, etc. Rhizobium helps in converting nitrogen from air to usable form for the plant. The plant in return provides food and shelter to the bacteria. अब राइजोबियम है जो लेग्यूमिनियस प्लांट का रिलेशनशिप भी है, वो भी आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. राइजोबियम जो है प्लांट्स की रूट पे डिपेंडेंट होता है फॉर न्यूट्रिशन, और बदले में वो क्या करता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. द प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, phosphorus and potassium are naturally present in the soil. When plants grow, they absorb nutrients, due to which the nutrients level in the soil continues to decrease. To maintain the fertility of soil, it needs to be replenished with the deficient nutrients. This can be done in the following two ways. Addition of manures and fertilizers. Crops grown in the fields require nitrogen in large amounts to make proteins. Plants will be healthy only if their nutrient requirements are fulfilled. This is the reason farmers add fertilizers and manure to the soil to maintain its nutrient levels. Manures are obtained by the decomposition of animal wastes and plant residues. They are rich in essential nutrients and humus.
cattle dung and slurry from biogas plant are mostly used by farmers. These manures supply essential nutrients and humus to the soil. अच्छा देखिए, आपकी जो है सॉइल में प्लांट्स उगते हैं, सॉइल में आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाता है. तो इस न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को किस तरह से रिप्लेनिश किया जाता है? बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. आपके जो मैन्योर्स होते हैं उसमें क्या होता है? आपका ये बनता है आपके एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू से, तो इनमें ह्यूमस होता है आपका, राइट. In forest, when the dead plants and animals decay, they act as natural fertilizers to the soil. But in agricultural field, the farmer add artificial fertilizers to the soil to provide nutrients to their crop. The two categories of fertilizers are NPK and urea. NPK is an organic fertilizer that provides nitrogen, phosphorus, and potassium to the soil, whereas urea is an organic fertilizer that provides nitrogen to the soil. Fertilizers used by farmers are urea, potassium nitrate, superphosphate, amorphous, and potassium sulfate. Fertilizers and manures both contain nutrients and minerals necessary for the growth of plants. अच्छा देखिए, क्या होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है कि फार्मर्स जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं. एक है आपका एनपीके एंड यूरिया. एनपीके जो है इसमें आपका होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ओके, जबकि आपका जो यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल को. एडिशन ऑफ कंपोस्ट. Compost is made by the decomposition of biodegradable wastes by the microorganisms. Compost is an organic manure that enriches the soil. It is added in the field to make up for the loss of nutrients. आप अगर कंपोस्ट ऐड करते हो तो वो क्या करेगा? वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा. Growing leguminous plants, nitrogen can be replenished in the soil by growing leguminous crops. The leguminous plants have root nodules in them which contain rhizobium bacteria. These bacteria can convert nitrogen present in the air into nitrogen compounds, nitrates. Some of these nitrogen compounds are used by the leguminous plants for their own growth. The remaining nitrogen compounds get mixed with the soil in the field and enrich it. Therefore, the farmers grow leguminous crops and non-leguminous crops in alternate manner. देखिए, नाइट्रोजन को रिप्लेनिश किया जाता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स को ग्रो करके. आपको पता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स, उनकी रूट में होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में. तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं? लेग्यूमिनियस क्रॉप्स और नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को अल्टरनेट मैनर में ग्रो करते हैं. क्रॉप रोटेशन. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड chiefly to preserve the productive capacity of the soil is called crop rotation. Growing same type of crops again and again depletes the same type of nutrients from the soil. Hence, different types of crops should be grown to provide different nutrients in the soil. देखिए, अगर एक ही फील्ड में आप सेम तरह की क्रॉप को उगाएंगे बार बार ओवर एंड ओवर अगेन, तो क्या होगा कि जो सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट उस क्रॉप को चाहिए होगा उस सॉइल में कम हो जाएगा. तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है. मतलब कि क्रॉप्स एक सीजन में अगर एक क्रॉप उसमें ग्रो की है तो नेक्स्ट सीजन में फिर दूसरी क्रॉप को उसमें उगाया जाएगा. Learning outcomes. All living organisms need nutrients. Nutrition can be autotrophic or heterotropic. Heterotropic nutrition in plants can be parasitic, saprophytic or symbiotic. Opening and closing of a stomata is controlled by guard cells. Photosynthesis takes place in the presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Food is stored in the form of a starch or carbohydrate in plants. Some plants eat insects to derive some nutrients. Nutrients like nitrogen are returned to soil by decaying of dead plants and animals, adding fertilizer to soil, growing leguminous plants and practicing crop rotation. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.